So in this session, we are going to discuss what is constructor, why constructor is important in the Java programming language or any other programming language. Second, how it is different from the function. Okay. Constructor is a type of function. It is also a type of function. Just like the function, it is also a category of the function, having the same name as the class name. Suppose the class name is student or ABC or XYZ. So always the constructor will be created with the same name as the class name. Okay, just a moment. Just a moment. See, suppose I've created a class exam. So if we define any function with the name of exam, that will be considered as constructor. The point number one is clear. Okay, this is a constructor. Second most important point, constructor does not have any written type because constructor does not return anything. And function always created along with the written type. Suppose this is a function. This is the name of the function. This is the body of the function. And this is the written type of the function. If the function have the written type void, that means this function will not return any value. Suppose this is a function. This is a function. And the return type of the function is int, means it will return the integer value. Got it? Understood? Okay. Now, just a moment. I have taken example, one more thing. It invoke or call automatically when the object is created. Constructor does not call manually. हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते. कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, लेकिन कब एक सिचुएशन अराइज होती है तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. So these points are clear. Now we are talking about the invoking or calling of the constructor. कंस्ट्रक्टर कब और कैसे कॉल होता है? जब भी किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. This is public static void main. I will provide a proper program and I am creating the object of the class. Suppose I have written exam obj is equal to new exam. This line is used for object creation, and this line is also called instantiation. Instantiation means we are creating an object. Now we break down this line. This is the name of class name. This is the name of object. Very important discussion is going on. This is a keyword used to allocate the memory to the object. Otherwise, if the memory will not allocate to the object will never create. So this is very important keyword. Used to allocate the memory to the object. Then only the object can be created. Now, what is this? This is constructor calling part. Due to this word or segment, the constructor call. Now, you can compare this word. इस word को देखो और इस word को देखो. They are absolutely same. तो इस पोर्शन की वजह से हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. अब कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी तुमने लिखा, सपोज आई हैव रिटन आई एम कंस्ट्रक्टर, तो जैसे ही आपकी लाइन कंप्लीट होगी, कंस्ट्रक्टर आपका इन्वोक और कॉल होगा और जो उसकी बॉडी में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा.
Now, this much discussion we have done. Now, just see this example. One more point is there. It may be parameterized and non-parameterized like the function. The constructor which does not accept any parameter. You can see that this portion is empty. This portion is empty. There is no variable inside this portion. Opening bracket and closing bracket portion is empty. That means this constructor is non-parameterized, right? When we write some variable between this common brackets, this is called parameterized constructor. Okay, so this is non-parameterized, this is parameterized. When non-parameterized and parameterized, both functions are existing in a class, this concept is called constructor overloading. Overloading. This is one of the most important question. What is constructor overloading? When more than one constructors are existing in a class, this situation or concept is called constructor overloading. Okay, great. Now, next point. If more than one constructor is existing in a class is called constructor overloading, this point is covered. This point is covered. Now, after that, constructor is used to initialize the data member with the initial value. This is the purpose of the constructor. जब हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है, just 1 minute, let me clear all this. Suppose this is a constructor, this is a class ABC, and this class have two data member A and B. Okay, and I have defined a constructor ABC. The name of the class and the function name is same, so this is called constructor. Constructor name and the class name should be matched. After that, I will initialize the default value to these data member. This is the purpose of the constructor. Constructor always used to initialize the basic or initial values to the data member. It will be given in the question, don't worry. Now this point, if we don't initialize or create any constructor, अगर हम यानी कि प्रोग्रामर कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता, then compiler of the Java creates one default hidden constructor, hidden unparameterized constructor. By default Java अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्टर कोई भी ऑब्जेक्ट क्लास का नहीं बन सकता. तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए कंस्ट्रक्टर होना इज मैंडेटरी. इफ यू डोंट क्रिएट द कंस्ट्रक्टर, then compiler will create the constructor, because constructor is essential for creating the object of the class. Are you getting? If you don't create this constructor, the compiler will create in the background. It will not visible, it will not show, but it will be there. Got it? Okay. After that, what is the difference between constructor and function? These are two very important difference. Function needs to be called. जब भी हम किसी फंक्शन को बनाते हैं तो उसे हमें कॉल करना पड़ता है. कभी भी फंक्शन अपने आप से कॉल नहीं होता. It has to be manually called. Constructor invoke or call automatically when the object is created. This is object. जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, उसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती. This is important point, but this is more important point. ठीक है? It always have the return type and the constructor does not have the return type. Constructor का कोई भी return type नहीं होता, not even void, and the function always created along with the return type. अगर function के साथ return type नहीं होगा तो function created ही नहीं हो सकता. ये एक बहुत ही essential point है कि कंस्ट्रक्टर विदाउट रिटर्न टाइप और फंक्शन ऑलवेज रिटर्न टाइप ही बनता है. गॉट इट? ऊपर हम लोगों ने रिटर्न टाइप के बारे में डिस्कशन किया था. वाइड, आईएनटी, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, ये सब किसी भी फंक्शन के रिटर्न टाइप होते हैं और ये सारी चीजें कंस्ट्रक्टर के साथ नहीं हो सकती. गॉट इट? ओके, फाइन.
अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. I am writing an example to differentiate what is constructor and what is function. Just a moment. One example in the BlueJ environment. So I'm starting the BlueJ. See, this is BlueJ, and here I'm writing example. The name of the class is exam. Okay, double click. I want to erase all this. Class exam. Okay, this is the name of class, and this is the body of the class. And I've taken some data member. This is called data member. These are called global variable, जो पूरे क्लास के अंदर कहीं भी यूज हो सकते हैं. इन्हें हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं. एग्जाम. Now we can see the name of the function and the class name is same, and there is no return type. There is no return type. So it will be constructor. यहां पर हमने लिखा system constructor is called. Okay. And I have already told you a constructor used to initialize the data member. So I've initialized some basic value like b is equal to 0. Now, this is function, not a constructor. दो रीजंस हैं. दो रीजंस है कि फंक्शन क्यों है. पहला रीजन, इसका नाम और क्लास का नाम डिफरेंट है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, इसके साथ रिटर्न टाइप है. देखो वाइड. और वाइड होने का मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टर हो ही नहीं सकता, ये एक फंक्शन है. गॉट इट. नाउ वी कैन प्रिंट अ फंक्शन. ओके. एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यू ऑफ ए. ओके, जो कि हमने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज की है. एंड आई एम प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ बी. एंड हियर आई एम यूजिंग प्रिंट एलन. नॉट दैट्स इट. इन सब की मैनेजिंग और कंट्रोलिंग मींस कंस्ट्रक्टर की मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग, फंक्शन की मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग मेन से होती है. तो मेन मस्ट बी देयर. पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन. दिस इज द फिक्स सिग्नेचर लाइन ऑफ जावा. तो ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में हम ये लाइन एज इट इज लिखते ही हैं. ओके. नाउ वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. तो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्लास का नाम देखना और समझना जरूरी होता है. तो नेम ऑफ द क्लास इज एग्जाम. तो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. एग्जाम obj is equal to new exam and open and closing bracket. जैसे ही हम ये लाइन लिखेंगे क्या होगा. what will happen. constructor will be automatically called but the function will not call, क्योंकि फंक्शन अपने आप कॉल नहीं होता. लेट मी कंपाइल दिस प्रोग्राम. देयर इज नो एरर. ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. फुल कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन. राइट क्लिक and I am running. For running, we have to right click on the class name and click on wide main and just click on OK. Now see, the constructor is called, but the function is not called because function does not call by itself. तो अब अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है तो you have to write a statement. Object name. So obj is the name of object which I have created for the class exam and dot function का नाम. So with the help of this statement, we can call any function which belongs to the exam class. Wait for a minute. Suppose I have created an object of a scanner class. Scanner ob is equal to new scanner and system.in. What we are doing, we are creating the object of scanner class. Now, if we want to call any function of the scanner class, we have to write ob dot next int. Now, I break down. This is the object of a scanner class, and this is the function of a scanner class, which we are calling with the help of object of scanner class. Similarly,
this is the object of exam class, and this is the function of exam class. So we are calling the function of the exam class with the help of object of the exam class. Got it? So this is the best example to explain the coordination between the constructor and the function. Hope you understand. This is object creation. This is function calling. Object creation means the constructor will be called in the background. And we have seen the example. Now, अब अगर हम इसको कंपाइल करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं, तो अब कंस्ट्रक्टर के साथ साथ हमें फंक्शन कॉलिंग के भी स्टेटमेंट स्क्रीन पर दिखाई देंगे. Just a moment. Now we can see that constructor is called. 1 minute. A function एक ही लाइन में आ रहा है, इसको हम लाइन को चेंज करना चाह रहे हैं. तो just a moment. The presentation is very important. See, I just want to put println. A function is called. Okay. Now a function is called. Okay. Compile. There is no error. Right click. Now you can see the proper output on the screen. This is absolutely fine. A constructor is called. Then a function is called. And these are the value which is set by the constructor and printing in the function. Understood? Okay. Let me close this and we are moving to the worksheet. वर्कशीट पर हमने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लिखी. ठीक है. सी, अब देखो, create the object of mp3 of the class music. These type of question can be asked in the exam. Just a moment. तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है mp3. द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेंशन्ड mp3 और क्लास का नाम क्या है? म्यूजिक. तो कैसे क्रिएट करेंगे? Music. First of all, we write down the name of class. Then mp3 is the name of object, is equal to new. Of course, new is very important. Then again name of class. That's it. This is the answer. Now, question number 2. Create the object of the mp4 of the class video. I'm sure you can do it. I'm giving the time, you can solve it. Create the class object. Create the object student of the class college. So how to write? Just a moment. College student is equal to new college. Create the object Rajguru and Bhagat Singh of the class freedom fighter. One by one, both the objects can be created. So we have to write freedom fighter. Don't talk. Then we have to write Rajguru is equal to new. Then again we have to write down the name of the class along with brackets, right? And for the Bhagat Singh, only this name will be changed with Bhagat Singh. Just a moment. Okay. So these 4 questions we have done. Now, अब scroll कर रहे हैं to see the other question of this worksheet. Just a moment. Create an object programmer. This is another very important question. See, look at this properly. Read the question properly in the examination. Always create an object programmer. This is the create an object programmer. This is the name of object of the class computer science. In such a manner to call
parameterized parameterized constructor of one string value and one integer value. Okay. Now listen how to do that. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास का नाम कंप्यूटर science is the name of class. Then we write down the object name to programmer. Then is equal to new. Okay. Then again we have to write the name of class computer science. Now the question is saying in such a manner that one string value and one integer value. तो एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी. तो हाउ टू पास? ABC is a string value and 101 is an integer value. Then only the parameterized constructor of this class will be called, which is accepting one string value and one integer value. So it's my assumption. हम इस क्वेश्चन के हिसाब से एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसा रहा होगा. जस्ट अ मोमेंट. क्लास का नाम कंप्यूटर साइंस और कंस्ट्रक्टर ऐसा बना होगा जो कि यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, बट सिनेरियो से हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस और यहां पर एक स्ट्रिंग होगी और यहां पर एक इंटीजर होगा and this will be the body of the constructor. So this value will be transferred in n and this 101 will be transferred in x. तब जा करके हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि पैरामीटराइज है. अगर हमारी क्लास के अंदर कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें उतनी वैल्यू पास करनी होती है ताकि इन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए. अदरवाइज ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो पाएगा. Got it. Now let me clear the screen. Scenario based. Another question. This sheet is about to complete in the few minutes. Okay. Now, class plant. The name of the class is plant. Static int x and y and int sum and product. This is very important keyword overused over here. Static. What's the meaning of static? When we define any data member with a static keyword, this is called class variable. This is called class variable or static variable. What are the class variable and what are the static variable? I will explain in a few minutes. Okay. And these are called instance variable. Instance variable. Now, what is the difference between class variable and instance variable? I will explain in a few minutes. Wait. So this is the class variable. Class variables are always declared along with the static keyword. And instance variable are always declared without static keyword. Without and combined both are called data members. My class is divided into two categories. One is data member, the another one is member function. And constructor and functions are the part of member functions. Variables are the part of data member. Okay. Now, see the name of class and see the function name is also plant. So it can be constructor. It will be constructor. ये कंस्ट्रक्टर ही होगा, इसके अलावा ये कुछ और नहीं हो सकता भैया. अब हम थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ. दिस इज द बॉडी ऑफ द constructor. It cannot be 1.0. It's a minor mistake. It will be 1 because product is defined with the integer data type. Okay. तो what is a class variable in the above? तो ये पूछ रहे हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में क्लास वेरिएबल कौन से हैं. तो क्लास वेरिएबल वही होते हैं जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन हो. तो x, y आर द क्लास वेरिएबल.
and sum and product are not the class variable, they are normally instance variable, right? Okay, so first answer is clear. A answer is clear. The variable which is declared with the static keyword are called the class variable. Okay, अब एक बात और बता दें, थोड़ा नीचे अंडरलाइन द इंस्टेंस वेरिएबल. ओके, इंस्टेंस वेरिएबल हमारे कौन से हैं? सम एंड प्रोडक्ट. उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए जैसा क्वेश्चन में कहा गया है. ओके, ओके. अब is there any constructor in the above fragment? If yes, then which type? क्या ऊपर के फ्रेगमेंट में कोई कंस्ट्रक्टर है? यस, आई हैव सीन द प्लांट इज अ कंस्ट्रक्टर. और वो किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है? नॉन पैरामीटराइज्ड. एक्सेलेंट. तो आंसर सी इज क्लियर. देयर इज अ कंस्ट्रक्टर and the type of constructor is non-parameterized. Okay. Create two objects of the above class, Erica palm and Cygonium. तो कैसे बनेगा ये? बस जल्दी जल्दी. ऑलमोस्ट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल. तो सबसे पहले क्लास का नाम जो कि प्लांट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम इज एरिका पाम. तो ARECA and PALM is equal to new and again the name of class, that is plant. Got it? So this is done. Similarly Cygonium will be done. बस इसकी जगह पर आपको ये नाम लेना होगा. Okay, rest of the statement will be same. All right, so I think this sheet is completed. There is no pending question. अब हम बात करते हैं कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं और जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, इनमें टेक्निकली क्या डिफरेंस है. बस within 2 or 3 minutes you will understand. See, suppose I create an object, of course in the public static void main. Okay, we create the object. तो हमने plant class का object बनाया. O1 is equal to new plant. Okay, and the open bracket and closing bracket. I am creating one more object. हम एक और object बना रहे हैं plant class का, just like that. अब जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं लाइक O1 एंड O2, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी इंडिविजुअल कॉपी होती है. मतलब O1 का सम और प्रोडक्ट अलग होगा और O2 का सम और प्रोडक्ट अलग होगा. यानी कि O1 के अंडर में एक सम बनेगा और एक प्रोडक्ट बनेगा. गॉट इट? और O2 के अंडर में भी एक सम बनेगा और एक प्रोडक्ट बनेगा. Means the individual copy of the instance variable is distributed among all the object. But जो हमारे static variable होते हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहते हैं. मतलब जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड नहीं हो. तो सारे ऑब्जेक्ट एक्स और वाई को कॉमनली एक्सेस करते हैं. जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली, उसमें एक ही कार होती है और पूरी फैमिली उसको शेयरिंग बेसिस पे यूज करती है. सपोज यू आर सिटिंग इन अ क्लास एंड अटेंडिंग द क्लास और सामने एक व्हाइट बोर्ड है. तो वो व्हाइट बोर्ड हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग नहीं होगा, एक ही व्हाइट बोर्ड होगा और सारे स्टूडेंट उसको कॉमनली एक्सेस करेंगे, देखेंगे. ओके, लेकिन जो तुम्हारी अपनी नोटबुक होती है, जो कॉपीज होती हैं, वो हर स्टूडेंट की अलग अलग होती हैं. तो कॉपीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल एंड व्हाइट बोर्ड इज अ स्टैटिक वेरिएबल. गॉट इट? तो अगर हम O1 के थ्रू x की वैल्यू 100 कर देते हैं, तो अगर x की वैल्यू 100 हो गई तो वो चेंज और रिफ्लेक्शन O2 के लिए भी एप्लीकेबल होगा. राइट? बट अगर हम O1 के थ्रू सम की वैल्यू चेंज करते हैं तो केवल वो रिफ्लेक्शन O1 के लिए सीमित रहेगा, O2 के लिए नहीं होगा, क्योंकि O2 का सम अलग है, O1 का सम अलग है.
तो जब कोई इंस्टेंस वेरिएबल में चेंज होता है तो वो ऑब्जेक्ट लेवल पे होता है, और जब कोई ग्लोबल यानी कि जब कोई स्टैटिक वेरिएबल में चेंज होता है तो वो सबके लिए कॉमन होता है। तुम अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हो तो वो तुम्हारे लिए है, बट अगर हम व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू ऑल द स्टूडेंट। गॉट इट? इस चैप्टर से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग प्रॉपरली। नाउ दिस इज द डाउट सेशन और कंफ्यूजन। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, बट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।